Hello students, the question is a satellite of mass m by 2 is revolving around Earth in a circular orbit at a height of r by 3 from the Earth's surface. The angular momentum of the satellite is m square root gmr upon x. The value of x is dash, where m and r are the mass and radius of Earth respectively. G is the gravitational constant. So the problem is based on the topic gravitation, and in this particular problem we have to find out the angular momentum of a body rotating around the Earth. Now the situation is something like this, that here is Earth, suppose this is Earth having a mass of m, and here is a satellite having a mass of m by 2. It is rotating in a circular path around Earth. Now there are two solutions of this problem. First of all, we find out the approximate solution which is given by the NTA, which is given in the answer key of the NTA, the approximate solution. Now the approximate solution assumes that we take the satellite motion or the circular path having the center at the center of the Earth. Actually it is not so in this particular case in the accurate manner, because both the masses are comparable. Earth mass is m, whereas the satellite mass is m by 2. So this is approximate solution which I am solving first. So by assuming first that the satellite is moving in a circular path having the center at the center of the Earth, we start the solution like this. For example, the centripetal force, which the satellite gets is by the gravitational attraction between the satellite and the Earth. So the gravitation force between them is given by g m1. M1 is the mass of Earth, m2 the mass of satellite, upon the distance between them. So the distance between them is, first of all, from the Earth's surface it is r by 3 distance away, and the radius of Earth is r. So the distance between the center of the satellite to the center of the Earth is given by 4r by 3, so its whole square. So this is the gravitation force between the satellite and the Earth, and it provides the centripetal force, which is given by mv square upon r. Here we are talking about the centripetal force of the satellite. So the mass of the satellite multiplied by v naught. Suppose we take the orbital velocity of the satellite to be v naught. So v naught square upon r. Now r is 4r by 3, as we have discussed. After solving this, we calculate the value of v naught. So the value of v naught comes out to be square root of 3 gm upon 4r. This is the value of v naught. Now from this value of v naught, we can calculate the angular momentum. The angular momentum is given by the formula L equals to mv naught r. mv naught r. Here we take the value, for example, we write it as small r. So the mass of the satellite is m by 2, orbital velocity which we have calculated as 3 gm upon 4r, and the radius of the circular path, as we have discussed, is 4r by 3. So after solving this, value comes out to be m times square root of gm r upon 3. So this is the value of the angular momentum of the satellite. After comparing it with the given value as m square root gm r upon x, we can certainly say that x is equal to 3. So this is the approximate solution of this particular problem, that by assuming the circular path of the satellite to be centered at the center of the Earth, this is the value of x. But the satellite is having the comparable mass to Earth. So this approximate solution is very far from the accurate results. So to calculate the accurate results, first of all, we have to find out the center of mass of the system. So to calculate the center of the mass of the system, we assume that, suppose this is the coordinate axis, we, for the sake of simplicity, we take the location of Earth as 0 0 at the center of the coordinate system, and here is our satellite.
So Earth having mass of m, satellite is having a mass of m by 2. For example, the center of mass is having a distance of x from the center of the Earth, and the total distance is 4r by 3 from center to center. So the center of mass cum is given by the Earth's mass multiplied by its location 0, then the mass of the satellite multiplied by the distance of the center of the satellite from the center of this coordinate system. So it is basically 4r by 3. Now it's divided by the total mass. Total mass is given by m plus m by 2. After solving this, center of mass comes out to be 4r by 9. So this value of x is 4r by 9. Or we can say that the rest of the distance, which we can calculate from the center of mass to the center of satellite, it comes out to be 4r by 3 minus 4r by 9. So this value comes out to be 8r by 9. This is the distance between the center of mass and the center of the satellite, 8r by 9. Now, as we have solved for the approximate solution, now we apply the rule for the accurate solution. So for the accurate solution, we have to equalize the gravitation force and the centripetal force. The centripetal force is provided by the gravitation force between them. So the gravitation force is given by G m1 m2 upon r square. The distance between them is 4r by 3 and its whole square. Now this is equal to the centripetal force, which is given by the mass of the satellite into the velocity square, orbital velocity square, divided by the distance between the center of mass and the satellite center. The important point here is this, that this satellite is moving now with respect to the center of mass. It is moving in a circular path at the center of mass of this Earth satellite system. So in this way, we have to take the value of radius as equal to the distance between center of mass and the satellite center, which we have calculated as 8r by 9. So we have to put here 8r by 9. Now after solving this, we get the value of v naught as equal to square root of gm by 2r. This is the value of the orbital velocity. Now we can calculate the angular momentum given by the formula mv naught r. So the value of m, small m, is the mass of the satellite is m by 2. V naught we have calculated as gm by 2r, and the radius in this case, as we have discussed, is 8r by 9. So after solving this completely, we get the result as equal to square root of gm gmr by 81, and here 8 is also present. So it is square root of 8 gmr upon 81. In this way, after comparison, we can say that the value of x is 81 by 8. So this is the accurate result. It is nearly equal to 10. So it is very far away from the approximate result, which is 3. So the accurate solution of this problem is 10. So hope you understand the explanation. यहाँ पे एक प्रॉब्लम पूछी गई है, इसमें कहा गया है एक सैटेलाइट है जिसका मास m/2 है, वो रिवॉल्व करता है अर्थ के राउंड अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में हाइट r/3 से। अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम सैटेलाइट का दे रखा है m स्क्वायर रूट gmr अपॉन x। यहाँ पे x अननोन है, इस अननोन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ कैपिटल M है और रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो कैपिटल R है। तो सबसे पहले हम इसको अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करेंगे, ये मानते हुए कि सैटेलाइट का जो सर्कुलर पाथ मूवमेंट है उसका सेंटर अर्थ के सेंटर से कोइंसाइड करता है। फिर उसके बाद हम एक्यूरेट सॉल्यूशन निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों में कितना डिफरेंस है, और इसमें आंसर जो है हमारा एक्यूरेट सॉल्यूशन का, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, 10 आता है। देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इक्वलाइज करना होगा ग्रेविटेशन फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को, क्योंकि सैटेलाइट को मूव करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा वो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स से मिलेगा। ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स के लिए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल G आप जानते ही हैं, इट इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट।
फिर उसके बाद हम फर्स्ट मास लेंगे, मास ऑफ द अर्थ जो कि है कैपिटल M। फिर उसके बाद हम सेकंड मास लेंगे m/2 जो सैटेलाइट का मास है अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम और उसका स्क्वायर। सो 4r/3 होल स्क्वायर, इसको हमें बराबर रख देना है सेंट्रीपिटल फोर्स के, जो बराबर होता है mv² r। यहाँ पे m हम लेंगे सैटेलाइट का, तो सैटेलाइट का मास m/2 और v0² उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी अपॉन जो डिस्टेंस है सैटेलाइट के सेंटर में और अर्थ के सेंटर के बीच में। इसे सॉल्व करके ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालेंगे जो निकल के आती है √3gm अपॉन 4r। अब हमें यहाँ पे निकालना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला होता है mv0r। यहाँ पे m लिया जाएगा सैटेलाइट का क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमें सैटेलाइट का निकालना है। तो यहाँ से इसे सॉल्व करके v0 की वैल्यू पुट करके r की जगह जो डिस्टेंस है दोनों के सेंटर्स के बीच में वो वैल्यू पुट करके जो वैल्यू निकल के आती है l की वो निकल के आती है m²√gmr/3। कंपेयर करेंगे इससे अगर हम जो गिवन वैल्यू है तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारी 3 निकल के आती है। ये एनटीए द्वारा दिया गया सॉल्यूशन है। अगर हम एक्यूरेट सॉल्यूशन की यहाँ पे बात करें तो उसके लिए हमें यहाँ पे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं साफ साफ कि जो अर्थ का मास है और सैटेलाइट का मास है काफ़ी हद तक कंपेरेबल है। हम बहुत स्मॉल नहीं कह सकते सैटेलाइट के मास को, इसलिए हम जो सर्कुलर पाथ जिसमें सैटेलाइट मूव कर रहा है उसको अर्थ के सेंटर पे जो है वो नहीं मान के चल सकते, उससे रिजल्ट हमारा काफ़ी डेविएट कर जाता है। तो इसलिए हम जो है सेंटर ऑफ मास पहले कैलकुलेट करेंगे जो बेसिक रूल्स हैं उसके हिसाब से। तो हम ये पाते हैं सेंटर ऑफ मास जो निकल के आता है अर्थ के सेंटर से 4r/9 डिस्टेंस पे निकल के आता है। टोटल डिस्टेंस है दोनों के सेंटर्स के बीच में 4r/3। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास और सैटेलाइट के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस आती है वो आती है 4r/3 माइनस 4r/9 जो की वैल्यू होगी 8r/9। अब हमें फिर से वही अप्रोच अपनानी है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है सैटेलाइट को मूव करने के लिए वो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स है उससे मिल रहा है। दोनों इक्वेशंस, दोनों हमने ये फॉर्मूले लिखे और उसे सॉल्व करके हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करी जो निकल के आती है √G∩M/2r। अब फिर से हमने एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी। m की जगह स्मॉल m की जगह हमने मास ऑफ द सैटेलाइट रखा, ऑर्बिटल वेलोसिटी की जगह √Gm/2r रखा और r की जगह हमने 8r/9 रखा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि हमें जो रेडियस लेनी है इसके सर्कुलर पाथ की वो सेंटर ऑफ मास के राउंड अबाउट लेनी है। तो इस तरह से जो है हम देखेंगे कि जो है सैटेलाइट भी जो है आपका एक सर्कुलर पाथ में सेंटर ऑफ मास के राउंड अबाउट जो है मूव करेगा। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो हम देखते हैं रिजल्ट आता है √8gmr/81। अगर हम कंपेयर करें गिवन इक्वेशंस के हिसाब से, इसमें एक फैक्टर और हमें ध्यान देना है, यहाँ पे एक m और प्रेजेंट होगा। तो m√8gmr/81। इसे कंपेयर करें हम तो x की वैल्यू हमारी निकल के आती है 81/8, यानी कि नियरली इक्वल टू हम कह सकते हैं 10 के आसपास जो है 10.1 के आसपास जो है रिजल्ट हमारा इसका निकल के आता है। सो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है इस प्रॉब्लम की। होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।